Assalamu alaikum. Today's topic is ecological interactions. This topic is taken from the unit that's ecological interactions and adaptations. Firstly, these interactions. What are these interactions? Interactions simply is a kind of actions that occurs between one or more individuals in an ecosystem. So interactions हम simply बोलेंगे is a kind of action that occurs between one or more individuals in an ecosystem. एक या एक से ज़्यादा जो individual ecosystem में है उनके बीच में जो action होती है that is called the interaction. So we know that in an ecosystem different species of organisms are present है ना बहुत सारे जो organism species होती है वो present होती है ecosystem में and these organisms they interact continuously. जो organisms हैं वो interact करते हैं एक दूसरे के साथ. They interact with each other, and because of their interactions they establish a different relationships among them. इस वजह से उनमें एक relationship बनती है इस interaction से. So one of the interactions जो organism में एक interactions रहती है that is called feeding interactions. Feeding interactions क्योंकि organism जो है वो depend करेगा दूसरे animal पे for their food. So organism एक ecosystem में जो है no organism can remain in complete isolation. No organism can remain in complete isolation. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि organism depend करेगा दूसरे animal पे for their food है ना उसके लिए उसको दूसरे animal का होना ज़रूरी है उस ecosystem में वो अकेले उस ecosystem में survive नहीं कर पाएगा. That is why कि organism एक नहीं रह सकता ecosystem में दूसरे organisms का होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है जिस वजह से इनमें interactions होती है. ये organisms जो है वो interact करेंगे. Organisms they interact with each other है ना by affecting each other's life. By affecting each other's life. इंटरेक्शन होगी इन ऑर्गेनिज्म के बीच में लेकिन वो अफेक्ट करेंगे एक दूसरे के लाइफ के इस इंटरेक्शन की वजह से. ये ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में वो compete करेंगे. इंटरेक्शन ड्यूरिंग इंटरेक्शन ये ऑर्गेनिज्म या तो compete करेंगे या कोऑपरेट करेंगे. with the members of same species or different species ये ऑर्गेनिज्म जिनमें जिनके बीच में इंटरेक्शंस होती है और ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शंस ये ऑर्गेनिज्म्स या compete करेंगे फॉर देयर फूड है ना इनमें कंपटीशन होगा. सो ये फूड के लिए compete करेंगे क्योंकि उनको सर्वाइव करना है इस इकोसिस्टम में या तो वो कोऑपरेट करेंगे. कोऑपरेट क्यों करेंगे? इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस इनको रिप्रोडक्शन के लिए कोऑपरेशन करनी है या compete करना है फूड के लिए फॉर देयर फूड या इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस. So, इस वजह से इनमें interactions रहती है. On the basis of these interactions, the ecological interactions can be defined as. Now we can define this ecological interaction. Can be defined as the interactions between the organisms. The interactions between the organisms
of either same species or different species by affecting their life. ये जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ आइदर सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज बाय अफेक्टिंग देयर लाइफ। या तो इंटरेक्शन देखो सेम स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होगा या डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। एंड दीज इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम, जो इंटरेक्शन होती है ऑर्गेनिज्म के बीच इकोसिस्टम में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका इंटरेक्शन ऑर्गेनिजम्स का। इम्पोर्टेंट क्यों है? एक तो इनका सर्वाइव जो है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है इकोसिस्टम में, उसके लिए इम्पोर्टेंट है इनके बीच में इंटरेक्शन होना। सेकेंडली हम देखते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम को भी रन करना है। इकोसिस्टम रन तभी होगा जब वहां पर इंटरेक्शंस होंगे एनिमल्स के बीच में, क्योंकि हमने देखा है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर एनिमल, और वी कैन से फ्रॉम one trophic level to another, that is from lower trophic level to a higher trophic level, so उस एनर्जी ट्रांसफर के लिए इनमें इंटरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई these ecological interactions is very important for the survival and for the functioning of an survival of an organism and for the function of an ecosystem. So these these ecological interactions, there are various types of interactions between the organisms, various types of interactions that occurs between the organisms in an ecosystem. ना बहुत सारे इंटरेक्शंस होती हैं इन ऑर्गन्स के बीच में। Generally, these ecological interactions, they are categorized as generally these interactions are categorized as interspecific interactions, and second is the intraspecific interactions. ये हमें वन बाय वन लेना है इंटरेक्शन, क्योंकि इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में बहुत टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन होती हैं ऑर्गन्स के बीच में, और इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन ये हम वन बाय वन लेंगे कि कौन कौन से इंटरेक्शन होते हैं ऑर्गन्स के बीच में। बट बिफोर दिस वी विल टेक द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। हम फ्लो चार्ट लेंगे, उस से हम देखेंगे कि कौन कौन से इंटरेक्शन होते हैं ऑर्गन्स के बीच में। With the help of this flow chart, this can be understood as ecological interactions. पहले हम लेंगे ecological interactions। हम पहले फ्लो चार्ट लेंगे इसका, इससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन से टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं ऑर्गन्स के बीच में। ecological interaction, इसके बाद हमें वन बाय वन लेना है इनको। ecological interactions भी मैंने बोला यहाँ पर इंटरस्पेसिफिक होता है, इंटरस्पेसिफिक interactions, second is the intraspecific interactions।
interactions. This includes interspecific interactions. ये interspecific interactions होता है between the organs of the different species. These interactions are those interactions that occurs between the members of the different species. इसमें आएंगे इसमें positive interactions होता है और second is the negative interaction. This positive interaction further includes symbiosis, this symbiosis includes mutualism, second is the facultative, और commensalism भी आएगा इसमें. Scavenging. ये different types of interactions है जो organs के बीच में होती है. Scavenging. And next is the negative. हम यहाँ पर लेंगे ऐसे. Negative में आएगा competition. Second इसमें आएगा parasitism. Third आएगा predation. And fourth it is amensalism. Predation further includes herbivore and carnivore. Herbivore and carnivore. Next जो है that is intraspecific interactions. These are the interactions that occurs between the members of the same species. यहाँ पर interaction same species के बीच में होती है. जो same species of organisms है उनके बीच में interaction होती है. यहाँ पर different species of organisms के बीच में interactions होती है. So this intraspecific interaction it includes cooperative interactions. Cooperative interactions. This further includes cooperative interaction. It includes mating. Secondly, it includes leadership. Third, it is territorial behavior. Territorial behavior. Next, it is parental care. Next, it is altruism. Altruism. Next जो है is group formation. Group formation. This further includes family formation. Family formation and aggregation behavior. And next it includes
is the competition, which includes cannibalism. Next, here is the society formation. Society formation, which includes the communication. So this is the flow chart. यहाँ पर हमने इस फ्लो चार्ट के थ्रू हमने देखा कि कितने टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस ऑर्गन्स के बीच में होती हैं. इनको हमें वन बाय वन लेना है, एंड these we will take in the next topic, is interspecific interactions and intraspecific interactions. So this is all about for today. Thank you.